Uh, Hello, guys. We are here live again with our panel to discuss on second topic, which is again related to Indian cricket team, and to continue with our previous discussion in from our first video, we are going to discuss a little more about the lower order, which is the bowling order, which is almost equivalent to the batting order which we have, and to win any kind of tournament, you need your bowling to click, and that is what we are going to discuss. So let's start today's topic with I will start with Piyush. Let's start with fast bowling attack because you are a fast bowler, so you must be aware of few things which we are not. So yeah, let's start. Yeah, I mean our fast bowling. If you talk about our fast bowling options, of course, Bumrah will be there for sure. Bumrah go, I mean, he's there. Hopefully, he'll be fit for the entire tournament and everything. But yeah, Yes. we have to make that our bowling revolves around him, and there are equivalent good bowlers who can support him because what happens a lot of time बुमराह के 4 ओवर है ना लोग डिफेंड कर लेते हैं या फिर उसके 4 ओवर में 25-30 रन निकाल के उसको सेफ खेल लेते हैं फिर उसको विकेट नहीं मिलते we need bowlers who can take wickets from the other end who can utilize whatever pressure Bumrah is creating and they can uh, capitalize on that pressure. ठीक है तो फास्ट बॉलिंग में अगर ऑप्शंस की बात करें बुमराह के अलावा कौन है अपने पास आई थिंक वी नीड अ लेफ्ट आर्म पेसर फॉर श्योर 100%. इफ यू लुक एट लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स ऑस्ट्रेलिया हैड स्टार्क उसके पहले इंग्लैंड हैड डेविड विली कभी भी Trent अपने Bolt. सब कॉन्टिनेंट के बाहर अगर वर्ल्ड कप हुआ है T20 वर्ल्ड कप एवरी टीम हैड अ लेफ्ट आर्म पेसर 2018, 2016 और 2014 सब कॉन्टिनेंट में हुए थे वेस्ट इंडीज और श्रीलंका जीती थी उनकी टीम में एक भी लेफ्ट आर्म पेसर नहीं था बट इफ यू गो बियॉन्ड दैट अगेन इंग्लैंड वन दे हैड रायन साइड बॉटम उसके पहले पाकिस्तान हैड मोहम्मद आमिर उसके पहले इंडिया हैड आरपी सिंह राइट again Yeah. this world Correct. cup is outside subcontinent so we need that left arm pacer who is that going to be I have options either we take Natarajan I know uska ball swing nahi hota hai but Yorkers are at least good Arshdeep is Yeah. there or we can go with Khalil Ahmed as well Correct. I mean he's not as good as Arshdeep and Natarajan Natarajan. runs as well but still not a bad option at all क्योंकि इसके अलावा Correct. मोहसिन खान को हमने कभी ट्राई नहीं किया है उसका पेस भी कम हो गया इंजरी के बाद तो आई डोंट थिंक ही विल बी इन कंटेंशन बट या एटलीस्ट वन ऑफ दिस थ्री एंड देन सेकंड पेसर वी कैन टेक मोहम्मद सिराज ही इज नॉट इन गुड फॉर्म राइट नाउ वो रिदम में उतना अच्छा नहीं है तो आई एम नॉट श्योर अबाउट हिम बट द अदर सेकंड पेसर कुड बी yeah, we may have to choose between these bowlers like Avesh Khan and Mukesh Kumar because these are some players who have represented India in T20s in last few series versus Afghanistan and some other bilateral series. But yeah, and then we have if we set these three fast bowlers, then we'll have to look for one odd fast bowling all rounder or medium pacer all rounder. It can be Hardik Pandya, but I am okay to take chances with Shivam Dube because I want that left arm hitter. I mean, left-handed batter who can bat as well. And because Hardik Pandya is not able to middle the ball right now, so personally, I am fine to take chances with Shivam Dube. But let's see. I mean, most likely Hardik Pandya will make the squad Correct. for obvious reasons. But what are your thoughts? Manan. See, I think if you're going to take pace bowlers, this is my view. I think we just take two pace bowlers in the team, Mm-hmm. Bumrah and a left arm pace bowler that you're talking about. Could it be Arshdeep or anyone else? And then at least if you're taking Hardik Pandya as an all rounder, give him that रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग एन ऑलराउंडर नॉट जस्ट कि भाई हाँ तू एक दो ओवर डाल ले मैच में ठीक हो जाएगा द Correct. Correct. एक्सपेक्टेशन सेटिंग हैज टू बी कि नहीं भाई तू चार ओवर डालने वाला बॉलर है हमारा मैच में और तुझे कुछ भी करके 4 ओवर डालनी है बिकॉज राइट नाउ ऑल्सो अगर हम आईपीएल में भी देखिए तो ही इज नॉट कंसिस्टेंटली बॉलिंग 4 ओवर्स इन फॉर मुंबई Yeah, Yeah. इंडियंस
वो 2 ओवर 3 ओवर 2 ओवर 3 ओवर डालता है, 4 ओवर नहीं डालता वो। और Correct. Yeah. if we are taking him as an all-rounder, expectation setting has to be कि भाई तू हमारा थर्ड पेस बॉलर है टीम में, एंड अकॉर्डिंगली Agree. तुझे 4 ओवर हर मैच में डालने पड़ेंगे Agree. ऐसा। एंड देन यू नो अदर जैसे हम, बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पेस बॉलर्स और लेफ्ट आर्म पेसर्स में, वी हैड अ लॉट ऑफ गाइज दैट वी ट्राइड। हमने एक चेतन साकरिया करके था, उसको ट्राई किया था, बट वी आर नॉट Mm-hmm. श्योर इफ उसका क्या स्टेटस है अभी। तो वो आई थिंक आईपीएल की टीम में भी नहीं खेल पा रहा है। तो Correct. इफ वी आर एक्चुअली कंसिडरिंग कि भाई हमको एक लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए, इट्स वर्थ अ व्हाइल कि भाई हम लोग यू नो एटलीस्ट एक बता दे कि भाई लेट्स ट्राई ऑल दीज प्लेयर्स, एटलीस्ट 2 3 मैच 4 मैच खिलाओ, क्या करता है पता तो चले। Mm. बिकॉज लास्ट ईयर he did really good for राजस्थान लास्ट सीजन। Mm-hmm. आई थिंक 10 12 विकेट लिए थे उसने कुछ पूरे आईपीएल के सीजन में, लास्ट में भी। एंड डिसेंट पेस बॉलर है यार, रणजी में भी अच्छा बॉलिंग किया था उसने सौराष्ट्र के लिए। तो डिसेंट पेस बॉलर है, लेफ्ट आर्म ऑप्शन है। बट मेरे हिसाब से स्पेयर हेड बुमराह, उसके साथ कोई एक पेस बॉलर, and Mm-hmm. then the rest of the bowling attack should be dependent on the all-rounders, because T20 में, like we've seen with Australia or we are seeing with England, they are going with a lot of all-rounders, because सिर्फ bowling नहीं करना, बैटिंग भी तो करवाना है ना। सिर्फ पेस Correct. बॉलिंग करवा के क्या करोगे? Correct. Correct. Yeah. What about you, Anosh? So yes, as Piyush mentioned about left arm bowlers, I think one more trend which in current IPL also we are seeing about those bowlers are that, for example, Mumbai have tried a lot to have a pace bowling attack and they have been a pretty successful franchise. So Mm-hmm. it is a very good like bar to judge that how good a decision to take a left armer is. So they have Mafaka right now and Behrendorff and also this Nuwan, some I have forgotten his name, Tushara. Sri Lanka. तुषारा हाँ, तो Correct. They have वो this. भी था उनके पास, तो दे लुक वुड ऑल्सो दे हैव, so they Mm. have made this very clear that they want a left armer in their pace attack, which, as Piyush mentioned, is a very good strategy. And luckily for us, in this current season, Khalil Ahmed is doing excellent in power play, especially with the first two Correct. or three overs he's bowling. And he has a potential, like we have seen in the past. Also, he has represented India as well, right? Yeah. So he is there within like in and around the team. So I think that option should be considered. And even Arshdeep has like right now is not. I mean, today he took 4 wickets, but generally this season he has not been in that form because last year I remember seeing him bowl and I was like कि इसको कोई मार ही नहीं पा रहा है. As Agree. in, it was obviously I'm not Agree. going to compare him with Bumrah, but as Piyush mentioned earlier also कि वो उसके ओवर सी थ्रू कर रहे हैं, तो वो Mm. ऐसे Mm. अर्शदीप को भी ऐसा ही ट्रीट कर रहे थे मतलब लास्ट ईयर काफी Correct. टाइम Correct. तक. एंड इवन वर्ल्ड ये- कप में मतलब उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा था. हाँ, या so he was a part of लास्ट वर्ल्ड कप T20 यस वर्ल्ड यस कप as well, right? एग्जैक्टली. Yeah. Correct. हाँ. तो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला भी है वो बढ़िया चीज है मतलब ऐसे. एंड अदर ऑप्शंस, नटराजन इज ओनली मतलब only issue with him is his fitness. So he misses a lot of games in IPL, and I don't think like already you spoke about Bumrah's fitness. Then we were talking about Hardik Pandya and if he is fit or not. So two players already we are carrying who we have to be careful utilizing with. So I don't think we should add that third player unless he proves us wrong कि मतलब अभी बचे हुए सारे मैचेस वो फिट रह के खेल जाए. एंड आई डोंट सी लाइक तीनों के अलावा कोई कंटेंशन में होगा मतलब अनलेस हम एंड इवन कोई न्यू नेम भी अभी अगर मतलब इमर्ज होके आता है तो आई डोंट थिंक ही विल बी कंसिडर्ड. ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है तो हाँ एंड the देयर इज नो selectors पॉइंट टू might टेक not go दैट with. रिस्क आल्सो. Yeah. लाइक जो है ट्राइड एंड टेस्टेड प्लस ऑलरेडी लाइक वी हैव टू मेंशन दैट वी आर मिसिंग मोहम्मद शमी इन दिस वर्ल्ड कप, who is going to be a huge miss, as we are seeing with even Gujarat right now that they are missing Mohammad Shami.
And yes, Correct. Piyush, I read your message. Couldn't agree कहते more. हो ना. He just gave 26 runs. He's a very like not how should I put this? He's not a Matlab, T20 bowler. I don't think Still, he has it in. he's king of domestic cricket Correct, in terms correct. of bowling, but somehow he is not able to like step up to that level yet, वो or we don't know कंसिस्टेंसी yet. नहीं है यार. At this कंसिस्टेंसी level. नहीं है. Yeah. Because domestic mein he has done excellent, so credit where it's due. Okay. Okay, fair enough, fair enough. I guess every one of you have picked two bowling options, right? And you are matching them with Hardik Pandya, who would be the third pacer, dropping 4 overs. And as we already discussed in our last कि वर्ल्ड कप है यूएसए के पिचेस किसी को पता नहीं है कैसे होने वाले हैं एंड वेस्ट इंडीज जहाँ पे पेसर्स का इतना काम नहीं होता है सो वी शुड बी हैविंग टू स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और स्पिनर्स एटलीस्ट. So two options are good. And I was thinking about out of an box option which was there till last week, I believe. Mayank Yadav. Nobody seems to remember him now because he has gone for some runs and he got injured also. So That is other the main out reason. I of think the runs, so I don't think runs So are the issue for him. मतलब थोड़ा fast uh, bowler है तो आ जाएंगे. But हाँ, injury prone. He is injury prone. I think he correct, played only correct, one game of first class cricket this season. So 2 games, again, 1 game. one or very two less, games yeah, exactly. yeah. Yeah. So yeah, So so yeah, he has I to be mean, maintained. Yeah. correct, correct. So looking at the pitch, my options would be, of course, if we are going to get three options, and I am not considering Hardik because अभी तक उसका bowling का I'm not sure कि वो 4 ओवर डालेगा नहीं डालेगा, and we cannot depend on him. So we need those three bowlers, and my options would be again the left-right combo of Bumrah and Arshdeep. I will prefer Arshdeep because he has played in this scenario, performed in front of Pakistan at that big of a match. So he has that, uh, balls of steel, we can say. And the third option, I would personally like to see Mohit Sharma representing India and in this T20 World Cup because very rarely I have seen any intelligent Indian bowler in a T20 scenario. So I think that he is the guy who is the most intelligent bowler apart from Bhuvneshwar Kumar. We cannot take Bhuvneshwar Kumar now. But Mohit Sharma would be an out of the box option, and he can be that intelligent bowler who can just give uh, just give runs, a 7-7 economy, and no Purple Patel should be entertained. I guess even Punjab would be looking to offload him. So yeah, I mean, if someone have scammed two teams back to back seasons, I don't think we should be trying that person in Indian cricket team. Sorry, Purple Patel. It it would be too harsh, but that is the reality. So yeah, but out of the Rohit uh, box, Sharma is a very good shout. if we take Mayank Yadav to World Cup, I think that will be out of the box because that Mang Yadav, Mohit Sharma, both would be the out of the box. mm, That would be a pace battery. How should I put in? The pitches are very, slow over there. So Bumrah bowling 140, 145, that would be enough from one end. Arshdeep bowling and swinging the balls at both end with 136, 135, that would be a decent. But again, Mayank Yadav coming in with those, we can say dust ball pitches, right, for West Indies bowling 150 plus would be a disaster for someone batting in front of him. So that mm, could be out of the box option. And other one, if not him, then Mohit Sharma, who is again, I have been following him from last 1.5 season now, since he came to Yeah, Gujarat Titans. a good season with Gujarat Titans this time around Correct. could possibly see him in. Could possibly be an out of box option for me. Other than that, Yeah. I don't have any And the bowler. wickets will suit him there. Correct. Those That is slow, what. grippy wickets. So Yes. That is that what. That is is what. Yes. very good Yes. for Yes. Slow, there. You see slow him, wickets. Yeah. you see him. He is not that pacey, but you see him match by match, match after match, and he would be taking wickets, giving only 7 point something economy runs, and that would be a good option. I guess we are done. We are done with pace there is battery. one guy.
here is fun fact. If we take Mohit Sharma in our squad, he will be the only pace bowler who played or represented India in 2014 World Cup final. Nice trivia. By the by the way, yeah. Only pace bowler, you said. Only pace bowler because Jadeja was playing 2014 final too. Kohli was also there, right? Yeah. Only yeah, that's why I said only medium pacer. Yeah. With Yeah. Jadeja, I bring this topic in front of you, the spinners. And I guess four of us or every one of us would be agreeing with the choice of Kuldeep Yadav. But who's the next option to support this guy in terms of spin bowling? Jadeja, because I'm focusing on that point. He should be playing as a bowling all rounder, and by looking at the face of Piyush, I should not give him the first chance to speak about him. Let's go with Manan. I guess Manan is a fan of Jadeja. Yeah. He So, has like I said with Hardik, right? When you are setting up the expectation that you are going to be our 4 over bowler with Ravindra Jadeja, there needs to be a expectation setting. You are going to be our finisher. आप 100 correct, 110 120 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकते. correct. आपको यू आर गोइंग टू कम इन. हाँ, इफ सिचुएशन डिमांड्स कि भाई 20 रन पे 4 विकेट गिर गए एंड यू हैव टू प्ले, खेलो. Yeah, बट रेगुलरली योर स्ट्राइक रेट हैज टू बी 150 प्लस, बिकॉज तुम आने वाले हो 5-6 नंबर पे बैटिंग करने. एंड इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि भाई तू 120 के स्ट्राइक रेट से खेल ले. वो तो हमारा कोहली भी खेल रहा है ओपनिंग में आके, तो डज नॉट मेक very एनी controversial. सेंस. नहीं, ओपनिंग में आके. Very controversial. So But yeah, go ahead. Yes. And just तुमको to add, मतलब, not to cut your point, Jadeja has that ability. It is not या like we are saying someone to like do something out of the box completely. Even in last year's IPL final, he scored in that last over. So and why not? that's why I'm saying expectation setting has to be that way, because you are capable of doing it, so you have to do it. Correct. Correct. Let's go to Anosh now. If he's in favor of Jaddu or Akshar, I believe. So yes, I think, like, from my recent memory, Akshar Patel has done very well for India whenever he has got the chance. I think there was one particular series in West Indies when I remember, Yeah. like, I was watching the match on DD Sports, I think, at that time, because no one took rights in India to show that series. Correct. So in that series, there was one ODI game, I think, where I had obviously slept through because the match goes on to the night. And when I slept, the score was something like, okay, we will probably not win it. And then सुबह उठ के Hmm. देखा तो अक्षर पटेल ने मैच जिताया था. एंड Correct. Correct. उसके बाद एक और ऐसा कोई मैच, मतलब आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट ये वेस्ट इंडीज वाला तो बहुत क्लियरली याद है. एंड ही वाज बैटिंग वेरी वेल. So the precedent is there that he has done well in West Indies as well. And बैटिंग Oh, उसकी, nice point. मतलब, अगेन, मतलब जडेजा और उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करने को है नहीं, मतलब ऐसे कुछ. तो व्हाट कम्स डाउन एट द एंड इज कि जडेजा द फील्डर गेट्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव पॉइंट्स, जो उसके सारे कंपटीशन में जो भी हैं, कितने भी Hmm. अच्छे हों, वो उससे ऊपर आ ही नहीं पाते हैं उस चीज में. Agree. बट Agree. अगेन, like, it is kind of a pattern now, like me talking about injuries to players. So Jadeja has been injured a lot. He has missed quite few, मतलब, quite a games recently. Not in IPL right now, but recently his record has not been very good in terms of fitness. Hmm. So that is again, obviously, if he's fit, I don't think that he will not be going to the World Cup if he's 100% fit. Hmm. So As he'll much he'll as be in the squad. we can discuss that he should be there, shouldn't be there, and what role he plays, as Manan pointed out, but I don't think the selectors can look away from him. Yeah. And uh, and also they also, I think they also feel that like ना अक्षर पटेल के साथ गलत हो रहा है इसके कारण. Like, जडेजा जब तक है तो Definitely. उसका पीक एजेस आर ऑब्वियसली गोइंग, अभी मतलब है, अभी पीक ईयर्स आर कमिंग, या पीक ईयर्स में चल रहा है अभी, बोल सकते हैं. तो वो भी एक पॉइंट है. तो वो आई थिंक एज अ बैकअप टू जडेजा, अक्षर पटेल विल ऑल्सो गो, आई थिंक.
तो दोनों में से कोई एक को वो चॉइस करके खिला देंगे, तो दैट इज व्हाट आई And फील। just to add to Manan's point, do you think Jadeja or Patel? Okay, let's ignore Patel because Jadeja would be probably playing in the 11. He would be a finisher which we are looking for because there is no He way he has to be. can bat in top six. He would be the seventh Yeah, he batsman. has to be. There's no other option because you're not going to play him in the top three, top four. He's only going to come in after five. So he has to be your finisher. There's no other option to But do that. you think he can? He has that ability. He has I don't shown the remember. I don't remember any recent matches where he have played Yeah, like recently, so this is more of a recency bias in terms of what, that. उसका I strike agree. rate कितना कम रहा है, नहीं रहा है. So he has shown that he has a good head over, over the shoulders. वो situation के हिसाब से खेल लेता है. Mhm. But then he needs to just ensure that there is that, finishing flair. अगर वो slow भी खेल रहा है तो when you finish मतलब 19-20th ओवर में आके you should be able to score at 200 in the 19th and 20th over. There's no other way to it. मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट आई थिंक 1 या 2 साल हो गए शायद उस मैच को, आई एम नॉट रॉन्ग, उसने और शार्दुल ठाकुर ने एक मैच बिल्कुल चेंज कर दिया था, मतलब फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन था आई थिंक, मुंबई एज यूजुअल दे लॉस्ट दैट मैच बिकॉज अक्षर एंड शार्दुल ने बहुत नीचे आके मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी फास्ट पेस पे मतलब अच्छे स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करी थी। तो एकदम से वो मतलब एकदम से याद आया मेरे को अच्छा वो मैच। एंड ऑल्सो आई फील आईपीएल में पर्टिकुलरली बहुत मिस यूज होता है उसका इन टर्म्स ऑफ हिज बैटिंग। या तो ऐसी सिचुएशन में भेजते हैं जब मतलब बिल्कुल कुछ उम्मीद ही नहीं बची होती है, और Hmm. या फिर वो इतना नीचे तक उसको बचा के रखने के चक्कर में पता नहीं फॉर सम रीजन लाइक क्यों उसको इतना नीचे 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 शिफ्ट करते रहते हैं वो लोग, एंड तब तक वो मतलब टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करना पड़ती है या मतलब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होती है। तो वो भी थोड़ा अनफेयर, मतलब आई फील कि उसके साथ थोड़ा सा अनफेयर रहता है मतलब वो। Hmm. For Akshar Patel, you are saying. Piyush, कैसे था फॉर अक्षर पटेल? Now we go to the biggest fan of Ravindra Jadeja, Mr. Piyush. See, personally, I don't hate him. I'm a CSK supporter, so I can't thank him enough for last season. बट जडेजा के साथ समस्या ये है कि यार ही गिव्स अस फॉल्स होप अबाउट डेप्थ इन आवर बैटिंग ऑर्डर। ये जो झूठी उम्मीद जगाता है ना कि जडेजा है एंड में तो अपने पास एक और बैट्समैन है, वो एक्चुअली में वो नहीं है। वो रेड बॉल में है, लेजेंड है, खेलते रहे, बट व्हाइट बॉल में ही हैजंट डन एनीथिंग एंड ही हैज रिप्रेजेंटेड अस इन सो मेनी वर्ल्ड कप्स। आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल मैच where he won a single-handedly through his batting efforts. So I would rather take him or I would rather take a player जो कि थोड़ा अच्छा बैटिंग कर ले, मे बी तेवाटिया, मे बी रियान पराग, और जरूरत पड़े तो 2 ओवर कर ले। अभिषेक शर्मा को खिला लो, चलो रिंकू सिंह को से एक आध 2 ओवर करा के उसको रिप्लेस कर दो जडेजा से। सो आई वुड रादर यूज दीज प्लेयर्स हु कैन बोल मे बी 2-3 ओवर्स। बट या ये फॉल्स होप नीचे ही कि भाई वो नीचे है, 5 विकेट भी गिर गए तो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेगा। जिस दिन ऐसा मैच फंसा ना कि 40 बॉल पे अपने को 80 रन चाहिए और अपने ऊपर के टॉप ऑर्डर, क्योंकि वो होता ही है कोलैप्स अपना इंडिया का, देख लो नॉकआउट मैच में होता ही है, तो ऐसा हो जाता है ना, उस Agree. दिन धरा जाता है, इससे नहीं मैच फिनिश होते हैं। तो या आई वुड रादर टेक प्रॉपर बैट्समैन हु कैन मे बी बॉल 2 or 3 ओवर्स इफ रिक्वायर्ड, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी बॉलिंग अपना ठीक ठाक हो गया है। वी गॉट बुमराह, मे बी लेट्स से इफ वी गॉट मयंक यादव, वी विल हैव वन लेफ्ट आर्म पेसर टू, एंड देन वील हैव हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे, वन ऑफ दोस गाइज। वी हैव कुलदीप यादव टू। सो वी डोंट रियली नीड अनदर बॉलर हु रियली नीड टू बॉल 4 ओवर्स। सो या जो भी अच्छी फील्डिंग कर रहा है, आई थिंक पराग और रिंकू अच्छे फील्डर्स भी है, तो मे बी नॉट एट जडेजास लेवल, बट वो ठीक ठाक फील्डिंग तो कर रहे हैं, रन बचाते हैं ये लोग, तो इनमें से so किसी एक को। रिंकू रिंकू आपको डजंट बोल। बेसिकली 8 ओवर निकालने हैं, राइट? सो बुमराह के 4 हो गए, अर्शदीप के 4 हो गए, कुलदीप के 4 हो गए, आपको 8 ओवर निकालने हैं। एंड इफ हम हार्दिक पांड्या को बोलते हैं कि भाई तू 4 ओवर डालने वाला है तो और 4 गए, आपको 4 ओवर बाकी लोगों में से निकालने हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु यू गेट दैट फ्रॉम। रविंद्र जाडेजा से निकालो या जैसे पीयूष ने बोला आप राहुल तेवटिया को खिलाओ या किसी और को खिलाओ,
But then the problem with these guys is they're not bowling regularly even in IPL. Like, I don't remember when did Rahul Tewatia last bowl. मतलब गुजरात में आके तो मैंने नहीं देखा उसको बॉलिंग करते हो. वो राजस्थान में था तभी बॉलिंग करता था शायद. करेक्ट। या टाइटंस में आके तो उसने बॉलिंग नहीं की. रियान पराग अगेन, आई वुड नॉट ट्रस्ट हिम विद 2 overs एज वेल, क्योंकि उसके पास डज ही possess दैट स्किल कि यू नो अगर जरूरत पड़ी तो वो 2 ओवर 3 ओवर डाल देगा. और पहले दो चार अपने पास विकेट भी ले ऑप्शन ले थे, आए। केदार जाधव, वो बिलो सी लेवल वाली बॉलिंग करता है, तो हो सकता है. बट देन यू नीड टू रियली थिंक दोज ऑप्शंस थ्रू. करेक्ट करेक्ट। वो अपने को वैसे 4 ही ओवर निकलवाना। देखो बुमराह के 4 हो गए, है ना। लेट्स से आई एम जस्ट काउंटिंग फॉर नाउ। मयंक यादव के 4 हो गए, अर्शदीप के 4 हो गए और कुलदीप के 4 हो गए। तो अपने को 4 ही ओवर निकल। देन वी हैव गॉट हार्दिक पांड्या टू, राइट। अगर उससे 2 करवाना है इसके लिए आई एम शिवम नॉट दुबे ले इवन, लेते हो तो आई शिवम एम दुबे जस्ट को छोड़ दो। कंसिडरिंग कि हम लोग 2 पेस बॉलर को लेके जा रहे हैं टीम में. आई उस थिंक मेरे को लगता सिचुएशन है में क्या 3 होगा? लगेंगे। मेरे हिसाब से जो मेरा लाइनअप है उसमें 3 पेसर्स लगेंगे अपने को, और तो एक प्रॉपर लगे हाथ स्पिनर, और एक स्पिनर लाइक जडेजा और तेवाटिया और अक्षर पटेल, जो भी ये खेल रहा है इस टाइप का। लगे सो आई हाथ विल अपनी नॉट यूज लाइनअप द सेकंड स्पिनर फॉर फुल 4 ओवर कोटा। लगे हाथ अपनी लाइनअप भी बता दो पीयूष। अरे फिर पूरा लाइनअप अगर नॉट बताने पूरा, जाऊं तो बट द स्क्वाड विच अच्छा, इज फॉर्मेट के हिसाब से ना। फॉर्मेट के हिसाब से, Bowling part of the squad. थ्री बॉलिंग थ्री पार्ट ऑफ पेस द स्क्वाड। बॉलर्स। आई वुड टेक 3 पेस बॉलर्स, 1 लेफ्ट आर्म पेसर, 2 राइट हैंड पेसर्स, है ना, फॉर श्योर। एंड देन कुलदीप यादव, चाइनामैन बॉलर चाहिए मेरे को। और उसका रिप्लेसमेंट अगर इफ ही डज नॉट डू वेल तो वी कैन कीप चाहल इन एक्स्ट्रा। 15 में रख सकते हैं चाहल को। फिर उसके अलावा आई विल टेक 1 पार्ट टाइम स्पिनर ऑलराउंडर, राइट, नॉट जडेजा, समवन एल्स। और फिर एक कीपर, और बचे हुए फिर अपने कितने बचते हैं फिर उसके बाद 6 बैट्समैन बच रहे हैं। तो या दैट इज हाउ माय कॉम्बिनेशन लुक्स लाइक। नहीं, एक कीपर के बाद 5 ही बैट्समैन बच रहे हैं। अगर इफ यू आर इंक्लूडिंग कीपर एंड बॉलर टुगेदर तो 6 ले लिए हैं तुमने नाम, 5 बच रहे हैं बैट्समैन। चलेगा ना, क्योंकि वो जो एक जो सेकंड स्पिनर जो है वो प्रॉपर बैट्समैन ही है, वो बॉलिंग कम करेगा वो। ओके ओके। तो 3 वैसे बॉलिंग ऑप्शन रियान से पराग ज्यादा। भी अभी इस सीजन में तो कर रहा है बॉलिंग, मैंने देखा वो डाल रहा है उसका वो केदार जाधव टाइप का, वो टेढ़ा टेढ़ा हम चला रहा है। आई थिंक वी शुड यूज दैट। ग्लेन मैक्सवेल कितने बॉलिंग करता है, अच्छा करता ही है। रेना यूज टू बॉल, राइट। एंड देन अदर डे वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली कि अपने कितने बैटर आज की तारीख में बॉलिंग करे, कोई कर ही नहीं रहा है। कोई So नहीं. we need to rethink about that option too. We need our batters to bowl regular. So that's the advantage Australia has, right? Because now Glenn Maxwell is a proper 4 over bowler. तो उनको एडिशनली एक स्पिनर के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती. Correct. तो वो हम्म तीन तीन चार पेस बॉलर खिला लेते हैं. 3 पेस बॉलर खिला लेते हैं, और साथ में ये मिचेल मार्श, कैमरन ग्रीन, वो भी 2-3 ओवर डालने वाले हैं. नाउ करेक्ट। दैट्स अ आई प्रॉब्लम थिंक वी उसमें हैव कि पता है अपने पास वो लग्जरी नहीं है. एक बेनिफिट उनको वो है कि कमिंस एंड स्टार्क बोथ कैन स्ट्राइक द बॉल नीचे आके 8-9 नंबर पे. तो मोर देन करेक्ट। ग्रीन एंड मार्च गिविंग देम ओवर्स, वो नीचे जो बैटिंग ऑर्डर में पावर हिटिंग की एबिलिटी है, दैट इज मोर आई थिंक द मतलब स्ट्रेंथ तो नहीं, बट मतलब उनको बहुत यूटिलिटी की चीज है वो. एंड ऑब्वियसली मतलब जेनेरिक. मैक्सवेल स्टार ओवर एज यू सेड. Correct. सो आई गेस 4 बॉलर्स तो सबके फिक्स हैं, राइट? कॉम्बिनेशन कुछ भी कर लो, 4 बॉलर सबके फिक्स हैं। इफ वी इंक्लूड हार्दिक पांड्या, 5 हो जाते हैं। अगर 2 पेसर के साथ जाते हैं तो भी एक स्पिनर हमको एक्स्ट्रा I लगेगा। would go with I would go 3 bowlers with Hardik Pandya. 2 pace bowlers, and Hardik Pandya is my third pace bowler, and then Kuldeep Yadav. एंड देन फिफ्थ बॉलर वुड बी और शुड बी जडेजा। Jadeja or Akshar, or like Piyush said, Tewatia ko khilao, or whosoever you are playing. That gives you an option for adding another batsman as well, in बट case you need. लगता है तीनों में किसी को लगता है कि बीसीसीआई अभी मतलब जडेजा को भी इग्नोर कर देगी, पटेल को भी इग्नोर कर देगी एंड तेवतिया को लेके आएगी?
Do you guys really Like, think that तो Tewatia जडेजा or खेलेगा, let's हार्दिक say पांड्या Ryan Paraga? खेलेगा. I mean, I read the news. Rohit Sharma and Virat Kohli are almost finalized too. Pant is also almost finalized. So yeah, it's not happening. I would rather have taken someone like a Sanju Samson, क्योंकि Sanju पंत I think Samson तो is he good could name. still make it. He will still I make it. think Yeah, he could still make it because Jitesh is not in that good touch right now. I mean, correct, I correct. don't have missed his innings today, but like No, he generally, didn't. He didn't do good. and I think चार में से दो सैमसन ने स्कोर कर दी already. Hmm. तो Hmm. सैमसन नहीं आएगा ना, क्योंकि and even in बैकअप last विकेट कीपर squad, केएल राहुल होगा. Oh. ये नाम कहाँ से आ रहा है? बैट्समैन पे So पहुंच गया. अभी बॉलिंग यूनिट फिक्स कर लेते पहले आज. बॉलिंग, हाँ, बॉलिंग यूनिट एक बार कंफर्म हो जाए, देन वील गो टू विकेट कीपर, नॉट इवन बैट्समैन. विकेट कीपर वुड बी द नेक्स्ट टॉपिक which we should discuss. So bowlers are almost done. Bowling unit, everyone, the combination can be different. दो bowler किसी के We पेसर have हैं. not discussed our second leg break option I believe that second leg versus break Yuzvendra option Chahal. is Yuzvendra Chahal, and he does not give the batting uh, Yeah, confidence. that I agree. मतलब that is his So weakness. So I have come to like accept the fact that because of his poor fielding and batting, non-batting abilities, he is not being preferred. But still, correct. I believe that if Hardik Pandya is bowling 4 overs and you have like Jadeja also in the team, so Bishnoi, this thing, Chahal and Kuldeep are not a bad options to pick, especially if someone is giving you overs up top. So Hardik, if in case he cannot bowl, so I think even in Dhoni's time, if you remember, there was this template that whenever Hardik Pandya was fit to bowl, Yuzi and Chahal were bowling in tandem, and they were very successful. But then in T20 tournaments, we have never picked Chahal, despite him being such a good T20 bowler. And Yeah, Bishnoi, I don't have any like this thing against Bishnoi, but he तो barely वो bowls. लेग स्पिनर थोड़ी है यार. Exactly. He just bowls googlies. But Yeah. the point is that he still gets wickets. एटलीस्ट मतलब फॉरनर्स जो है मतलब अभी अपने आईपीएल में इंडियन बैट्समैन को शायद वो इतना परेशान नहीं करता है जितना ओवरसीज बट इफ बैट्समैन यू को. सी दिस टाइम अराउंड उसका आईपीएल में भी परफॉर्मेंस बहुत कम है, बिकॉज आईपीएल में तो कंपटीशन ही नहीं है. मतलब यूजी ऑलवेज डज बेटर देन हिम. नहीं वो अभी फॉर फॉरेन प्लेयर आल्सो ही इज नो मिस्ट्री एनीमोर, क्योंकि उनको पता है ये गूगली डालने वाला है. वो 24 में से 18 बॉल तो गूगली डालता है, तो बाकी तो सीधी वो निकल जाती है. उसको चेंज कर दो, ऑफ स्पिनर बोल दो उसको. नहीं, वो बट लेग स्पिनर है बट ही नहीं. बट अगेन, अगर आपको चाहल और कुलदीप दोनों चाहिए हैं टीम में, तो आपको दो ही पेसर मिलेंगे. इफ यू correct. वर टेकिंग थ्री, और हमारे पास फिर अगर हम जडेजा को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमारे पास तीन स्पिनर्स, दो पेसर्स और एक हार्दिक पांड्या बचता है. हमारी बैटिंग डेप्थ इसमें आई गेस कम हो जाती है. तो एंड सिंस I'll just say 1 point for batting depth. Barely it happens that कि 7 8 9 नंबर वाला कोई आके मैच जिताने चले बैटिंग आते हैं. करेगा. बिकॉज अगर करेक्ट, ऊपर वाले नहीं कर पाए तो नीचे वालों से तो फिर आप मतलब यू कैनॉट कंप्लेन कि मतलब इनने नहीं करा, ये फिनिश नहीं करा, नहीं अपने करा. इंडिया के केस में नहीं होता है, बट इधर अदर कंट्रीज इट हैपेंस. कार्लोस ब्रेथवेट रेयरली. फिनिश्ड फाइनल. और ब्रैथवेट तो प्रॉपर बैट्समैन था यार. मतलब He came he was, 6 7 down, I बॉलिंग think. ऑलराउंडर, यू कैन से बॉलिंग हाँ मतलब ऑलराउंडर. दे हैव सो मेनी सो ऑलराउंडर्स. तो वो वो तो वहां पे ऑलराउंडर वाली टीम है ना यार. हाँ, एग्जैक्टली. that's why I think So West Indies wait, favorite. wait, guys. Abhi meeting is about to end. So let me start another one, and you guys can join there, so we can continue this topic. Cool.